through reading news and articles. This particular event is organized by ISPEL CG Forum and I, Chirantan Dasmapatra, a research scholar of Government JY Chhattisgarh College, welcome you all heartily for this event. And I am very grateful to ISPEL CG Forum that today I have been given the opportunity to be the moderator of the event. As we all know that ISPEL has the motto of facilitate to elevate. And this is not the first time that we are conducting some event for the upliftment of the English speaking, or rather you can say English reading, writing and vocabulary skill of the students all around Chhattisgarh. We have already covered various events before that. As I can say, why it is important to learn English. This particular session was organized by Dr. G. A. Ganesham sir, our Honorable Ganesham sir. And along with that, we can say learning English through mobile phone by Dr. S. S. Vaishnav sir, basic sounds of English language and pronunciation by Anil Sharma sir, and effective communication skills by Dr. Smita Sharma ma'am. So we have already conducted various events on our motto to promote the reading, writing, and communication skills of the students among Chhattisgarh in English. And today also we are heading for the same. And now, with due permission of our chairperson, ma'am, now I would like to welcome you all and especially our chief speaker for today's evening, Dr. Chandrasekhar Sharma sir. Ma'am, chairperson, ma'am, may I proceed? Yes, sir. Please proceed. Thank you. Thank you. Dr. Chandrasekhar Sharma sir is an associate professor and head of department English at Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg. He has also served the Royal Bhutan Institute of Technology under Royal University of Bhutan for 9 years as assistant professor. His expertise lies in professional communication, folk literature, and Indian literature, especially in Indian diaspora. He has been teaching professional communication for about 2 decades. He has co-authored 2 books and edited 2. He holds diploma in university training from University of New Brunswick. He has been awarded for his literary works by various organizations. He was awarded 3 times for being amongst national topper and continued academic distinction in NPTEL courses at national level. He has published 20 research papers. He was the chairman of the Board of Studies of English at Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai. Sir, I heartily welcome you. Sir, please start our today's session. Please enlighten us. Sir, over to you. Sharma sir. Yes. Thank you very much, Chirantan, for this introduction. Respected professors, in fact, I would like to call them all gurus because I'm much junior to them. Good evening, ISPEL, the chairperson of today's event, the moderator, Mr. Chirantan, Indrani, who was looking after all the things here, and the pivot behind this evening, this satsang, I should say, Dr. Harpreet Madam. Respected Yugal Kishore sir, Kirti Madam, my warm regards to all my elders. I must remember the patron of ISPEL, Dr. G. A. Ganesham. I'm highly hopeful that he will be joining us very soon. The topic I have chosen today is here on the screen, honing language skills through reading newspapers and articles. I'll be deliberating on this
with a with an objective that how the newspapers are the best resources before our eyes to improve our skills in English. Magazines are very rare these days because of economic reasons. That's the first one. But newspapers are still a part of our life. Why I chose this? The first question comes here, and why this objective? While observing our society, in fact, all of us being a part of this academia agree that the reading habit of our students and the youth as well has drastically decreased these days. If we compare to our old, that is the golden old or gold times, newspapers were part of our popular culture. But these days, though we have newspapers, headings have become a part of our culture. That is the popular culture. Most of us do not read the newspaper. Rather, we over our eyesight over the headings and we feel that we have read the news. We have become information seeker rather than fact developer, or we can say that we have become a box of information who wants information and who serves information. But one thing that has really gone up these days is communication skills. And a person's intellect is judged by the command over the language used by him or her. Intellect is shown these days in how you communicate. What are the words? What is your command over the language? So I have chosen this topic so that we, the teachers, can use our newspapers as academic resource for our students, and we can use it for ourselves also. Now, let us come to language. I will not take much time, but let me talk a little bit about language. What basically language learning is. Chomsky says that, and it is not only Chomsky, even the Vedas have delineated it. And somewhere, I don't remember the verse, it is in Gurbani as well, that a man's identity is the language, the content that is used by him. And that language is not learnt, the verse says. It is borrowed from the society, and the man contributes the language to the society. Very beautiful words. I do not remember actually the words, but it says that we borrow it from the society and we leave it in the society. That is what the literatures are doing. So language is not learned, acquired by different sources. Just take an example of Chhattisgarhi. Most of us, we know Chhattisgarhi. We never went to any spoken Chhattisgarhi class, or we haven't bought any book by like Lucent or Rapidex. So learn Chhattisgarhi in 30 days or 20 days or so. We haven't gone to any coaching class that claims to teach English in 90 hours or Chhattisgarhi in 90 hours. But still we know Chhattisgarhi or Hindi. Why it is so? It is so. It is so because we have nurtured our mindset amidst the different sources, and from there the language came to us. And language acquisition needs a learner's involvement. We were involved in that. We go to bazaar and we pick up two or three words, two or three sentences, and we come home. Then we deliver them in front of our children or family members. So the language flows like that. And this process is a continuous process. It requires a man's involvement, and it goes on and on. It's a continuous process. So the conclusion is
the environment plays an important role in language acquisition, and hence, a during to somewhere around 2012 and 13, language labs became a very popular phenomena in Department of English in this country. Everywhere there was talk about language lab, and they were in different. But by 2020, let me say, if not precisely, but let me assume by 2020, there started a question in National Board of Accreditation that why do you need a language lab these days when there are so many materials available online free of charge? The teacher was required, was expected to explore these sources and argument of NBA, not mine. But so language is very important in our life. That is one thing. We need to create an environment for our students and for ourselves as well. Now, what does a language constitute of? Let me take an example of English, because we need to focus more on English. Hindi is acquired naturally by us. It is our mother tongue. And English is still a foreign language for us. I am using this word EFL, English as foreign language, with a very cautious mind, because there may be an argument that English is a second language for us, but in fact, it is still a foreign language for us because it is not naturally a mother tongue. Let this argument go away, but let's come. What are the constituents of English language? So first is the that we are well as, and here is the challenge. Then comes the sense, images, then syntax, and all. Now, as you move down in this, you find the complexity increases. But these complex issues not so complex that cannot be met, that cannot hone our skills in English. There are four skills in communication. Four basic skills are there. These now among these two, the primary is the listening one, and hence LSRW, not RWLS. Listening comes first. Man learns when he listens. My focus is on reading. How our newspapers in English can help us for honing our skills in English language. Am I audible? Yes, sir, you are. Now, let us, what is the difference between a newspaper and a magazine? I'm not projecting to show any mastery or any differences between newspapers and magazines, but just make people aware that how does the differ. First thing is newspapers are very economic, very they have content content in a that I am not any but give a newspaper to any student, English to any student,
student, I believe he won't be able to he would be ये दोनों ऑप्शंस में से जो भी अवेलेबल है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमने पहले देखा कि ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। ये आज या कल का न्यूज़पेपर का एक हमने पेज स्नैपशॉट लिया, ये हिंदू का है। नाउ सी, किसी से भी पूछें तो मैंने आज का ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो ठीक रहता है, बट वी ऑल आर लर्नर्स और मेरे टीचर्स यहाँ पर हैं तो आई हैव टू बी इन माय लिमिट। एनीवेज, तो ये देखा तो अब हम
क्या हेडिंग्स जो है वो इतनी एडवांस है, अट्रैक्टिव है कि वो इस पूरे 3 कॉलम के समाचार का एक्सट्रैक्ट जो है वहां दिख जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब वो पत्थर के अक्षर होते थे, वो प्रिंटिंग प्रेसेस में मैं काम किया है, मैंने देखा है, तो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट कि 2 लाइन की हेडिंग बनाना है, तो वो जो कंपोजिटर होता था ना बहुत परेशान होता था, क्योंकि उसको गेली बनाना होता था, वो पेचकस से टाइप करता था, और कहीं एक अक्षर भी ढीला छूट गया तो वो छपता नहीं था, तो बहुत इतना करने के बाद में होता ये कि द पर्सन सेज दैट कि हो गया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आई नो दैट इट इज इंफॉर्मेटिव, बट नहीं, नो, द कंटेंट इज हियर वेयर माय माउस इज होवरिंग ओवर। कंटेंट यहाँ है, लैंग्वेज यहाँ है, ये तो उसका जस्ट एक स्नैपशॉट है, जो पिक्चर खींच करके उसने हमारे सामने रखा है। द लैंग्वेज इज हियर, द वोकैबुलरी इज हियर, एंड द चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इज लाइंग हियर। ये अंदर रखा हुआ है, जिस पर से जिसको पढ़ने वाले 10 या 20% ही होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। While I was deciding over this topic, I talked to an editor. So he was saying, the editor was saying, editor of a very reputed newspaper was saying, शर्मा आजकल पढ़ता कौन है? So we were discussing on this topic. तो मैंने पूछा कि उससे समस्या क्या है? पहले ये था कि there used to be one newspaper and there used to be 4 readers. 4 पड़ोसी उसको पढ़ लेते थे. The problem today, he was saying, is that पढ़ता कौन है? मेहनत उतनी ही लग रही है, टाइपिंग उतनी ही लग रही है, रिसोर्सेज उतने ही है. People are not reading. This is an observation of a reader. I told how do you say this? He said that there used to be a time when people would read the letters and write to me their comments on postcards. Then came a time when people had bicycles and they would run to the person and say that ये न्यूज में आपने अंदर में ये देखे ना, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है, कॉमा नहीं है, and the feedback used to be there. He was saying that in a day he would receive, in those days, at least 6 to 7 feedbacks, and they would happily publish those letters and observations. Now his observation is that we have stopped the columns of letters to the editor. आज नहीं है. And this shows that, according to him, this shows that people are reading the headlines only. And that is why the comment, that is why the language is not progressive. That is why we are poor in expressions. Just take some examples, don't take it otherwise. I was preparing a dictionary of all these things, and we shared with a very well-known person. Very soon it will be in your hands. It's a very brief booklet. आपने कुछ एक्सप्रेशन सुने होंगे जो मैं भी कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा. जैसे कि if let's take an example of English. Most of our students, most of us, wow, they find any beautiful thing, they say, wow. At the most somebody would be there who would be saying beautiful. और अगर हिंदी में जाऊं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि यू विल बी पुलिंग और योर स्टमक व्हेन आई से. अगर कोई सुंदर चीज, अच्छी चीज दिख गई, कोई अच्छा फ्लावर दिख गया, ग्रीटिंग दिख गया, वाओ. वाओ कहने की बजाय हिंदी में तो आजकल नए नए शब्द है, जैसे कि एक नंबर. तो व्हाट डज दिस एक नंबर मीन? It simply shows that you don't have command over the language. You are not rich in you are not rich in a particular language. ये हिंदी की दशा है. Let's go to English. They have only one word
that is awesome. Only one word. I'm hearing past 5 to 6 years. Only one word, awesome or wow. उसके सिवाय है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कंटेंट में जाने की कोशिश, we never try to dive into the content. My effort is that I'm working with lab. Myself on skill for that. You have over you. Don't read the headlines. Don't read it. Don't read the headlines first. Don't read them. Jump content and own heading and try match it with the heading that is given by the editor if you have control. But our students do not. So what we do is that I make my lab staff cut this headlines. न्यूज़पेपर कटवा देते हैं, हेडलाइंस काट देते हैं उसकी. तो जो न्यूज होती है वो उसको जानबूझकर पढ़ना होता है क्योंकि उसको भी करना है. He has or she has to be, उसको प्रेजेंट भी करना है, तो वो जानबूझकर. In fact, I as a teacher, frankly speaking, I don't call myself teacher still. I'm a student. So I as a student, students and everyone would need these resources. Number one, a pen. If the objective matches, that is honing language skills by reading newspapers and magazine, the first resource is pen, not your eye. वो तो है यार, तो पेन चाहिए. Then a notebook or a piece of paper. एक notebook चाहिए, एक piece of paper. And then you need a newspaper or a magazine. दो में से कोई भी एक चीज हो तो भी काम चल जाएगा. लेकिन अगर लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो बिना पेन और नोटबुक के, बिना पेन के तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उस न्यूज़पेपर पे काम करना है. अब हम जब पढ़ते हैं, when you read for honing your language skills, आपने इन तीन I'm begging my pardon, ये जो है पीपीटी को एज अ पीडीएफ प्ले किया जा रहा है, सो इम्पैक्ट्स नहीं है because it was getting slow, so I thought better to play it as a PDF. So I'm simply rolling it down. तीन स्ट्रेटजीज हमारे पास बड़ी कॉमन है. SQ3R रीडिंग स्ट्रेटजी है. इसमें फर्स्ट द पर्सन हैज टू सर्वे, देन generate some questions if they are not in the text, generate some questions for himself or herself, then read the article, then recite it, close the eyes and recite it, then review and check your learning. Second strategy hai PSQ5R, in which first the reader has to identify the purpose, then start survey, then question, and then we have 5 R's: read, recite, review, recall, and read. Then comes KWL, know what you want to know and then learn. लेकिन हमें जब इस लेवल पर अपनी रीडिंग से लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तब हमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रीडिंग करनी. और व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रीडिंग? When we read for improving our language skills, we first need to identify an objective. When I am reading an article, what I am reading for? एक तो इंफॉर्मेशन के लिए हम पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए पढ़ें या पढ़ाएं, तब हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है. वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम क्या करवाना चाहते हैं. ये यहाँ पर, if we go back, it is here. What do you want to teach? You want your students, you want to improve our vocabulary, स्ट्रक्चर सिखाना चाहते हैं सेंटेंसेस के, फ्रेमिंग सिखाना चाहते हैं सेंटेंस के, तो सेंटेंस पर फोकस होगा. लेटर सिखाना चाहते हैं, इवन जो बच्चे हैं बहुत जल्दी स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन से, और ये हम करते आए हैं. ऐसा नहीं है हम कुछ नया कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में पहले से होता रहा है. ये न्यूज़पेपर सामने है और दादाजी ने कहा देखो ये म लिखा है, म
कोई जरूरी नहीं है क से शुरू हो, म से भी शुरू होता था, र से भी शुरू होता था, ह से भी शुरू होता था, क्योंकि बच्चा क ख ग तो वहां से सीख कर आता था। तो लेटर्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। वोकैबुलरी जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको मैंने यहाँ वर्ड्स लिखा हुआ है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, इडियम्स है, फ्रेजेस है, ग्रामेटिकल सिंटैक्स है, ये सारी चीजें जो ये हमारे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रीडिंग जो है, ये इस पर आपको हमें डिसाइड करना कि व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। पंक्चुएशन एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इडियम्स एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आज ये जो आर्टिकल पढ़ा जा रहा है, ये या ये जो न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, ये 10 आर्टिकल पढ़े जाएंगे, दिस इज फॉर लर्निंग द पंक्चुएशन या टीचिंग द पंक्चुएशन। वर्ड्स के वोकैबुलरी के लिए हो तो ये दिस इज फॉर वोकैबुलरी। तो आज वोकैबुलरी के करना क्या है, उसमें हमें अपनी कलम उठानी है। पढ़ना आंख से नहीं है, पढ़ना हमें कलम से है। मींस वी हैव टू रीड यूजिंग अ पेन। वोकैबुलरी एनरिचमेंट के 4 phases हैं। Number 1, you identify some words, then idioms, phrases or jargons. This is an article जो हमने फर्स्ट वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए इसको मैंने चूज किया है। अब करना कुछ नहीं है, इसमें होता ये है, किया ये जा सकता है कि यू नीड टू पिक अप योर पेन और जितने नए वर्ड्स हैं, माय बेसिक पर्पस या कहें ऑब्जेक्टिव इज नॉट द इंफॉर्मेशन बट द वर्ड्स। तो वर्ड्स को हमने इसमें अंडरलाइन करवाया है। लड़का सिर्फ पढ़ते जाता है, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं वो छोड़ दो आप, दैट इज अनदर पार्ट। द फर्स्ट थिंग इज गो ऑन अंडरलाइनिंग द words that are new to you, that are difficult to you, that you have never heard before or heard somewhere but you are not able to। तो उसने ये काम शुरू किया, हमने फोकसिंग हो गया, किसी के लिए hazardous, then implement, roadmap, collectivize, initiative, enterprise, empowerment, severage, rejuvenation, equip, implementing, ये वर्ड्स यहाँ पर क्लियर ये पेपर में नोट होता है। These are the words that we have. Now what happens, जब ये वर्ड्स हमारे पास में है तो अच्छी लैंग्वेज वाला व्यक्ति या गुड कमांड उसी की होगी। राइट वर्ड और राइट टर्म और राइट कंटेक्स्ट एट राइट टाइम। राइट वर्ड और राइट कंटेक्स्ट एट राइट टाइम, ये कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या वोकैबुलरी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो रीडिंग होगी उससे हमें ये पता चलता है। वी गेट फ्रॉम हियर। So, in 1 or 2 days it won't improve, but it will go side by side. So this is the very first day ये काम हुआ और इस काम में there were some new words that were obtained, and what was seen and is seen that these words go and fit into the memory very soon, because the focus is on word and not on the story. In the language of journalism we call it as a story. So it's not on story but it is on the word. So when the words move into the memory, their usage also moves into it, because you search for the meaning. इनके मीनिंग आप सर्च करेंगे और इनका यूसेज जो है यहाँ पर है, तो अगेन द पर्सन हैज टू माइग्रेट टू द स्टोरी टू नो द यूसेज। एक उसको डिक्शनरी मिल गई, डिक्शनरी से एक यूसेज मिल गया, उसकी मीनिंग मिल गई, एंड अगेन दूसरा यूसेज उसको यहाँ से मिल गया। इन दिस वे द वोकैबुलरी स्किल्स आर देयर। Let me take you to the second. Now this is an example of an article which was read, which should be read for 4 months. Second day, third day जब भी आए तो technical terms जो है उनके लिए है। Now what are basically jargons? Jargons are the words or the vocabulary related to a particular field. Now, there are some words related to medical field, there are some related to teaching, there are some related to pharmacy, there are some related to mountaineering, there are some related to defense. तो ये एक एग्जांपल के रूप में हमने इसे लिया। मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉर्मली यूज नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में ही यूज होते हैं। Now these words
ये जब ये वर्ड्स हैं, इनकी साइड में एक लिस्ट होगी और वो लिस्ट के साथ में that will these words will be understood. The person will get an insight into it by reading the story. क्योंकि फर्स्ट डे उसने स्टोरी नहीं पढ़ी, अब सेकंड डे वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और वो स्टोरी पर आते हैं, मतलब न्यूज आर्टिकल पर आते हैं, उसको पढ़ें. And then what happens is that they pick up the difficult terms from here, and they come to know that these are very specific terms that are to be used in specific cases. You will see here that there is no heading out here. हमने second day से heading हटा दी है इसमें. So track, what is track? So they know TRACK, track. Now today they are exposed to a new TREK, track. They know conquer, CONQUER, conquer means fight, but today there's a new word with a different meaning, conquer, conquering a mountain. Now hairstylist is there, increased mobility, barrier-free environment. These are the new. And what happens when these words are in the memory? They come to the tip of the tongue. There's a third article which was read again for some jargons. Jargon के लिए इनको फिर पढ़ा जा रहा है. Tipid responses. ऑटोमेटिकली अब यहां जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है. इफ यू सी हियर दैट हमने यहां पर वर्ड्स के कपल को आइडेंटिफाई किया है. अगला और पिछला वर्ड, दोनों वर्ड इसमें अंडरलाइन है. व्हाई दिस इज सो? सो ह्यूज रेस्पॉन्स बच्चे ने सुना है, टिपिड रेस्पॉन्स कभी नहीं सुना है. टिपिड रेस्पॉन्स, सॉरी, कन्विंस सुना है, एंटायरली कन्विंस नहीं सुना है. Now in this way his vocabulary is getting sharper and sharper, getting polished everything. Prospects नहीं जानता, long term जानता है. Long term prospects, a large pool of, for him or her एक ही शब्द वो जानता है, that is swimming pool. बट यहां पर ये वर्ड कुछ दूसरी चीज को बता रहा है. तो इवेंचुअली देयर विल बी अ डाउट. उसको वो देखेगा, उसको वो पढ़ेगा, और पहला फोकस ये है कि हम जो है स्वयं से इसको पहले करें. तो दैट दिस नॉट फॉर गाइडेड टीचिंग, बट लड़का पढ़े और उसको खुद सर्च करे, बिकॉज देयर इज अ स्मार्टफोन इन एवरी पॉकेट दीज डेज. सर्च इट. जब वो खुद से सर्च करता है, व्हेन ही लेबर्स, he remembers it. Spatial dispensation, equity dilution, these are all the jargons related to fiscal matters. But the students, they enjoy it, they learn it. Then comes punctuation. Most of our students are weak in punctuations. Full stop and comma are easily identified and they know that. But when it comes to ITS, it's without apostrophe s, and ITS with apostrophe s, दोनों का difference नहीं मालूम sir. Capitalization is also a part of punctuation. No sir, that is not known. So what we do here is we can learn punctuations with the help of newspapers as well, but we need to identify that news article which is rich in punctuation. And when they read that article, they need not focus on words this time, but they have to focus only on the punctuation marks, and their job is to just underline it or put a tick mark over it. These are the tick marks and underlines by me. Students थोड़ा सा और साफ सुथरा काम करते हैं. They are very very good in that. So जहां जहां कॉमा है वहां पर टिक मार्क लगे, जहां apostrophe है वहां टिक मार्क लगे. This is here, and then there is a discussion that why here is why that a comma is here, why apostrophe s is here, why a dash is here. And this way the student learns the punctuation marks. Now same goes for me also. मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है. I also enjoy learning for punctuation. What I do is here, what to do, ये हम उनको ठीक कर लें. और उसके बाद आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि इसको पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने के बाद में हम उसको दोबारा पढ़वाते हैं. पहले तो उसमें पढ़ा ही नहीं है, अब उसको पंक्चुएशन मार्क्स पर जो मार्क्स लगे हैं उसके साथ पढ़ाना है. तो वो पढ़ता है इंडियन पैडलर्स, इंक्लूडिंग स्टार प्लेयर मानिका बत्रा,
on Tuesday. So he understands, or I understand that how much do I need to stop for a comma, and how much do I need to stop for a full stop. How should I pronounce the words with apostrophe and words without apostrophe? How much should I wait for dash and for a colon? We need to identify that. So from this particular piece of news, the students or myself has learned comma, full stop, capitalization, and abbreviations, how to write abbreviations. Let me move to the next. Now comes the syntax, very difficult one. We all teach the students, and we all know that we have three types of sentences. One simple, another one is complex, another one is compound. And newspapers are best resources to make ourselves or our students aware about the structure of these, because they usually sentences. It's not harmful. It's not at all harmful. It's okay. Let them do that. But they must have a proper exposure. Now, here's a news article which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 लाइंस इसमें है, और 8वीं लाइन के आखिरी में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है. वेरी लॉन्ग सेंटेंस, सबसे बहुत बड़ा सेंटेंस लगा मुझे, और इसको हमने ऐसे इसको मार्क कर रखा है. ये मेरे लिए भी काम का है, क्योंकि मैं भी बहुत छोटे नहीं, एक फुल स्टॉप यहाँ पर, सॉरी. तो 6 लाइंस के बाद इसके अंदर में एक फुल स्टॉप लगा है. ऐसी एक स्टोरी हमारे यहाँ भूटान में थी, उसमें फुल पैराग्राफ एक सेंटेंस हुआ करता था. हमने बहुत सर्च किया तो वहाँ ठाकुर सिंह पौडेल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, काफी लर्नेड आदमी थे उस समय. तो he used to discuss all these things. A minister, being a minister, because he was a teacher, and an education minister in Bhutan has to be a teacher, and a health minister has to be a doctor. That's the basic qualification to become minister. So we discussed once that sir, ये इतना एक ये story है that some Western context, and people are our students do not understand because they don't have such a very huge exposure to Western culture, and it's full of one paragraph is equal to one sentence. So the answer was that let the students know how to frame a very long sentence also. You teach them how to frame short sentence. Same objective is here. ये बड़ा sentence उनको कैसे होना है, ये पूरा paragraph अपने आप में एक sentence है. The second one, the 18-year-old Ritika, on the other hand, heaved 6 kgs less than her compatriot, 150 kg, 69 plus 81 kg, to bag the bronze medal in a depleted 10-lifter field. The moment you make a student, or we make our student read, or I read, I feel or I get a sense how a long sentence can be constructed. Similarly, there are so many information here in this particular article, और इसमें सारे sentences जो हैं वो complex and compound, most of them, and that is why this article is good for learning the sentences. We can also learn or gain our command over tenses and verbs with the help of newspaper articles. And that is quite easy. We can go on underlining the verbs. Now, there are 12 different forms of verbs, present, past and future. तो ये इसमें मैंने सबका मिला दिया है. तो किसी दिन सिर्फ मुझे simple present tense अगर hone करना है अपना simple present tense, तो I would simply underline all the verbs in simple present tense, and then I'll read that. I'll read those underlined verbs and try to after reading those words, the first step is pick up an article. Second is underline the
verbs in a particular form, yeah, tense, let us say in tense, and then read those verbs, and after reading those verbs, read these sentences. So अगर 20 verbs मैंने underline किए तो लास्ट में फोर्थ स्टेप होगी 20 मेरे को सेंटेंस पढ़ने होंगे. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है थोड़ा सा लेबोरियस है, राइट? लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. वो प्रॉब्लम ये है कि इन आवर क्लासरूम सेटअप student remember only those examples that are taught. Just take an example. Ram eats mango. If I teach this in my class, if anybody या किसी भी बच्चे को या दिमाग में बैठ गया राम eats mango, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, mango is eaten by Ram, that's okay. यहीं तक है. इसको थोड़ा सा दूसरा काम कर दें कि प्रवीण reads newspaper every day. And the students, they appeal that sir बैंक में भी नहीं था सर, टेंस तो पढ़ाया था लेकिन ये वाला एग्जांपल नहीं था. वो जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्सपोजर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एक्सपोजर से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे हम दूर कर सकते हैं कि ये यहाँ पर है ना. अभी जब सेंटेंस उसने पढ़ा कोई, तो वो सेंटेंस पढ़ करके एटलीस्ट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एक्सपोजर ये है. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट माटी पूजन दिवस ऑन अक्षय तृतीया. सिंपल सेंटेंस है, यहीं पर रुक जाना तो उसको समझ में आता है. विल सेलिब्रेट फ्यूचर टेंस है. बाकी का उसका एक दूसरा फ्रेज उसमें जोड़ा गया और उसको एक बड़ा सेंटेंस बनाया गया. टेंसेस को यहाँ पर मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये सब करके जो है उसको टेंस समझ में आ जाता है. और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको नरेशन भी समझ में आ जाता है, क्योंकि किसी बड़े आर्टिकल में हमको ये मिल जाता है कि व्हाट इज इट, दिस इज डायरेक्ट नरेशन है भाई. ये ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि अभी भी उसको यही याद रहता है बच्चे को या न्यू लैंग्वेज लर्नर को कि मुझे तो एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, उसी पे काम करना है. वो सेट 20 एग्जांपल है, वही आना है. प्रैक्टिकबिलिटी से उसको जोड़ने के लिए न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट. लेट मी मूव फर्दर. प्रीपोजिशंस और कोलोकेशंस का भी बहुत काम आता है. जस्ट अ मोमेंट. मुझे अगली बार विंडोज 10 का लैपटॉप नहीं चाहिए, 7 का दे दिया. This is too bad. Now this article has been used for learning prepositions. The prepositions have been underlined. The student was not allowed to read the article or the story. In journalism we call it a story. तो स्टोरी उसको पढ़नी नहीं है, उसको केवल जो है ऐसे ऐसे प्रीपोजिशंस अंडरलाइन करने, नॉट द वोकैबुलरी, जिसकी लिस्ट उसे पहले से पता है. फायदा क्या है एंड व्हाट द प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि वो पहले इनको अंडरलाइन करना है, उसे पढ़ना है, और फिर इस प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड और succeeding word. He has to read the preceding as well as succeeding word all together. That means 3 words evolved over the last few years. What the evolution, experience of senior, lead them. और इसी में से समझ में आता है कि हमारा जो प्रीपोजिशन की होल्ड है वो अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज वन प्रीपोजिशन और a single preposition can be used in different contexts. At कई तरीके से at use होता है. So इसको और रिफाइन करने के लिए what we do is that we make them underline a particular preposition. अगर किसी आर्टिकल में at ज्यादा है तो at ही अंडरलाइन करना है. तो कुछ के जब वो at अंडरलाइन करता है तो 3-4 एग्जांपल्स या सेंटेंसेस पढ़ने के बाद इट बिकम्स क्लियर कि at टाइम के लिए भी है और लोकेशन के लिए भी है, पोजीशन. ये we can plan objective based reading material depending on the needs of the students.
ये तो कुछ था जो हमने आपको बताया, मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया था, तो that I wanted to share, and madam permitted me once. What are the benefits? The number one that I found was grammar becomes very interesting in this. Now, when I say grammar, I don't mean the traditional approach to grammar. I mean the syntactical approach to grammar. जो ग्रामर के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत जल्दी से समझ में आते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट, द रीडर, द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू अ प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ the language he is learning, particularly the foreign language. Another one is that the reader is focused because we are catering to the specific needs of that reader. So reader remains focused कि मुझे तो इतना ही काम करना है. और एक न्यूज़पेपर का या एक आर्टिकल या मैगजीन के आर्टिकल की जब कटिंग हाथ में होती है या वो सामने होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है क्योंकि वो उसके दौर का होता है. It belongs to the times he is living in. Shakespeare doesn't belong to the time that I am living in, but still, वो जब उसके टाइम का है तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जनरेट होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द रीडर रिमेन्स फोकस्ड. रीडर जो है वो फोकस्ड रहता है उसके ऊपर, इज फोकस्ड ओवर इट. देन फास्ट कैटरिंग टू द लिंग्विस्टिक. बहुत जल्दी जो स्टूडेंट की जो लिंग्विस्टिक नीड्स है उसको ये कैटर करती है ये मेथोडोलॉजी. मुझे नहीं पता ये पहले किसी ने किया कि नहीं, बट आई वर्कड ऑन इट and I found it very useful. It caters fast. Somebody is very, very poor in vocabulary. Just give him 3 or 4 articles or some newspapers. He will be starting with it. So it contributes to activeness. I'm sorry for the typing mistake here. It contributes to the active learning. Student remains active because something which is belonging to his time is in front of his eyes. Something related to his own interest is there. And third thing is that he is not dependent on others. उसके बगल वाले के पास कोई दूसरी चीज या हो सकता है सेम चीज है, दो लोग मिलकर पढ़ रहे हैं. So it contributes to activeness. Immediate feedback is obtained. If there is any doubt, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो आपसे पूछना ही है उसको. आप यू कैन योरसेल्फ भी, मतलब हम भी उस वैसे ही करते हैं कि मैं खुद एक्टिव रहता हूं जब मुझे ऐसा कुछ पढ़ना होता है. टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे पढ़ना है तो आई वर्क ऑन विद अ पेन. Immediate feedback is there. मेरे अंदर से एक feedback आता है immediately. Okay, I have done. Oh no, today I have not. Independent learning. The person is forced to work independently. He is not depending on other sources. What I mean by this, he is not depending on the student sitting beside him. He is not depending on the prescribed material of the boards or universities. He is independent. So when a person or matured person feels independence, motivation is generated. उसके अंदर से मोटिवेशन आता है, नहीं ये मुझे सीखना है. और वो एक स्टेप को जैसे ही पार करता है कि सर ये मेरा प्रीपोजिशन वाला हो गया, मेरे को अब समझ में आ गया, तो he becomes self motivated to get I'm sorry, to move towards the other article. सर दूसरा भी मिलेगा, सर ये अच्छा लगेगा, सर घर के लिए दे दीजिए. Now one can put a question कि now why you need newspapers when a smartphone is there and the articles are also there on the websites. Those articles are full of noise. Because when you make a student read on mobile phone, ये practical मैंने किया है. I have done that in my class. Problem, the focus is disturbed. Number one. Number two, there are so many softwares which are apps in the terminology of Android. There are so many apps that starts him digressing from the topic. That deviates his attention. WhatsApp में कोई मैसेज आया है क्या, कहीं रील, फेसबुक में किया, लाइक किया, तो स्मार्ट becomes
barrier to learning this. But when he has a piece of paper, his smartphone अगर आपने उसको allow किया, उसमें चीज देखी जो समझ में नहीं आई. With this, the end presentation. If there are questions, the floor is open. And I'm very grateful to all of of who gave chance to for you. These are my patients. I've written a paper also on this international stack, tenses and vocabulary. So thank you very much for your patience listening, and thank you iSpell for giving me a chance. Thanks a lot. Over to you, Indrani ma'am.
working in a rural area, so I found that whenever I entered in the class, they get scared. Some their face is looking nervous like that. So how would I improve their interest towards the language? The basic things I wanted to know, sir. Thank you, Avish bhai. However, one thing that is very natural is that uh, every student has hesitation towards a foreign language. हिंदी का लेक्चर या हिंदी का जो पीरियड होता है क्लास में, उसमें बच्चा बड़े इंटरेस्ट से बैठता है. अंग्रेजी का जैसे ही शुरू होता है उसको थोड़ा लगने लगता है बोझ. और ये Yes. बोझ उसको क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. देयर आर टू थिंग्स. वन, कल्चरली उस लैंग्वेज से वो डिस्प्लेस्ड है. Yes. कल्चरली उससे डिस्प्लेस्ड. दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट. इफ यू प्लांट those context of local life into the foreign language, the interest would be generated. Just take an example कि हम I don't know whether you are where you are teaching, but एक Actually, एग्जाम्पल I'm है. एक मान लेते हैं आप टीच कर रहे हो सुकमा में या कोंटा में, और वहां पर आपने कोई टॉपिक दिया लिखने के लिए टेलीविजन के दुरुपयोग. जी. ठीक. और इसी को आपने हिंदी में दिया डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन और स्मार्टफोन. कल्चरली इस टॉपिक से वो जुड़ नहीं पा रहा है. दो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर हम छोटा करें, ठीक, कैसे छोटा कर दें कि उसकी लोकल लाइफ से इसको जोड़ दो, तो वो शायद उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा. The person will be starting taking interest in it. That is where the language teachers face the challenge. उसको दिमाग में अंग्रेजी बहुत कठिन विषय हो जाता है क्योंकि वो उससे कल्चरली डिस्प्लेस्ड है. टेक एन एग्जांपल कि हम जो एग्जांपल टेंस पढ़ाते समय या कुछ पढ़ाते समय या कोई लेसन या पोएट्री पढ़ाते समय जब आप सब जब देते हैं, तो उसमें लगने लगता है कि आई एम वेरी फार फ्रॉम दिस, ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है. हमें उसको उससे जोड़ देना है. कैसे जोड़ें? कि जब आप फॉर एग्जांपल ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो और हमने टेंस शुरू किया. जनरल थिंग है, जनरल एस्पेक्ट कि द पर्सन सेज या टीचर जो है वो बताना शुरू करता है कि राम गोज टू मार्केट. राइट सर? राम मार्केट ना, उसके लाइफ में ये नाम अभी तक आया ही नहीं है. उसके लाइफ में तो सुकालू है, दुकालू है, गीता है. वहां से एक एग्जाम्पल दो, दुकालू गोज टू फॉरेस्ट या दुकालू लाइक्स तेंदू. The moment you do this, the love for language will be naturally sparked. Somebody's microphone is on. Can you please mute it? तो जब आप उसको कल्चरली वहां पर उसके कल्चरल एनवायरनमेंट में अपनी लैंग्वेज को स्थापित कर दोगे, when you will be positioning the foreign language in his cultural context या in his societal context, अपने आप उसका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा. The first thing is the interest. It's not the grammar, it's not any other thing, it's the interest. उसका वो इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए. वो इंटरेस्ट उसमें तभी आएगा जब वो उससे कल्चरली कनेक्ट हो पाए. और न्यूज़पेपर यही काम करते हैं, उसको कल्चरली कनेक्ट करते हैं. इंडिया मैच जीता, इसका एक न्यूज क्लासरूम में आप फ्लोट कर दें जब भी आपको टेंस पढ़ाना हो, पोजीशन पढ़ाना हो. छोटा सा है, हर जगह रिसोर्सेज नहीं होते, नो डाउट, लेकिन जैसे भी हो अगर उसको आप फ्लोट किया तो वो उसका इंटरेस्ट अपने आप वो उसमें बाउंड टू दैट. इसलिए मैथ्स वालों ने काम कर दिया. एग्जांपल्स अभी आपने मैच किताबें देखी, टेस्ट और इन दिस क्रिकेट मैच इन दिस ईयर
and in the following year he has made these many runs. So how many more runs he has made? अब वो जब बच्चा देखता है ना सचिन तेंदुलकर, तो वो थोड़ा सा मैथ्स के प्रति इंटरेस्टेड हो जाता है. तो कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना है सर. आई थिंक आई हैव आंसर्ड टू योर क्वेरी सर. Sir, please unmute yourself. Thank you, sir. I hope, Bhavesh sir, you got the answer of your question. And another important question that I have received, sir, from Richa Khalko, ma'am. Sir, can you give research scholars some tips to use news articles with reference to their topic, and how we can do it effectively? It's very interesting question. Sir, please. Really very interesting and advanced level question. Now, newspapers are meant for basic things, right? For the basic learners. For a research scholar, I would suggest that you need to read research papers rather than the newspapers. Focus more on research papers. The research vocabulary, or the vocabulary related to research, like let us say a word, Rita Khalko madam, are you there? Richa Khalko. She has left the meeting. So let me answer. There is a word called Orientalism, postmodernism. ये वर्ड्स आपको रिसर्च में तब मिलेंगे जब आप रिसर्च पेपर पढ़ें. एक से न्यूज़पेपर से जो है वो आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज बढ़ जाएगी, नो डाउट. फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस बढ़ते चले जाएंगे. लेकिन जब आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तब आपको उनका लिखने का तरीका और उनके एक्सप्रेशंस प्लस उनके जो स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो पता चलते हैं. तो रिसर्च स्कॉलर के लिए अब जॉब टू फोल्ड हो गया. अगर कहीं आपके कमांड ओवर लैंग्वेज गड़बड़ है तो बेटर है न्यूज़पेपर से ज्यादा आप मैगजीन्स पर फोकस करें, क्योंकि मैगजीन आर्टिकल्स आर एनालिटिकल और आप एक रिसर्च स्कॉलर को एनालिटिकल होना ज्यादा जरूरी है. ही हैज टू बी एनालिटिकल. तो वो एनालिटिकल होने के लिए आपको क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तो बेसिक हैं, ठीक है, वहां तक आप ले लें. उसके बाद आप मैगजीन आर्टिकल्स जो एनालिटिकल है वो लें. वहां से वोकैबुलरी ज्यादा आपको हेल्प करेगी. इट विल बी हेल्पिंग मच. बट माय सजेशन इज रीड द आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, रीड द रिसर्च आर्टिकल्स फर्स्ट. थीसिस, ऑनलाइन थीसिस मिल जाती हैं बहुत सारी, तो थीसिस पढ़िए. वो आपके जो रिसर्च की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, जैसे मार्केट की लैंग्वेज होती है, सोसाइटी की एक लैंग्वेज होती है, वैसे रिसर्च की अपनी लैंग्वेज होती है. मतलब उसमें स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है. वो क्वालिटीज आपको जो है मैगजीन आर्टिकल्स या एनालिटिकल आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स में मिलेंगी. सो रीड दैट. अब उनको कैसे पढ़ना है, यही स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे. ऑब्जेक्टिव ऐसे चेंज हो जाएगी, नाउ यू विल बी रीडिंग फॉर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. जैसे कि आपने कुछ चीज पढ़ी, तो आपका रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू इंडियन लिटरेचर है फॉर एग्जांपल, तो वहां पर कहीं पर कोई चीज आया तो आपकी पेन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पर दौड़ेगी. अब वोकैबुलरी पर नहीं, या पंक्चुएशन पर नहीं, या ग्रामर पर नहीं. इट विल बी रिलेटेड टू योर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट. Thank you, sir. I hope hello. you have got your answer. Yes. Hello. Yeah, I wanted to know something else, sir. Yes. To Sharma, sir. Sir. Yes, Bhavesh. Yeah, sir. Most of the time, whenever I think how to teach the language, especially the English language, sir, the Hindi medium student and the English medium student, they identify the language in a different way. So most of the time I realize that grammar translation method, whether which method I should use, grammar translation method or direct method or structural method. There are so many other methods as well. But most of the time I realize that grammar translation method is more applicable for a Hindi medium student or direct method. So I wanted to know your point of view. Which method should I follow? A very good question related to pedagogy. There are many methods of teaching language, many, and
50 methods of teaching. But for all, you need to identify the context. The context plays a role. We are there not for the method. Please, please take this with a pinch of salt that we are not there for a method. We are there for the learner. We are there to teach a particular lesson, poetry, which is known as text technically. We are there to help the learner to learn a language through a text. Right, sir? Now, which methodology fix it into a particular situation depends on the teacher. Maybe you are very good in direct method. I'm not. Maybe. Or another one is not. So he has to identify where his or what are the needs of the learner, and as per the needs of the learner, which method would better will be better or will better fit into that context. कोई जरूरी नहीं है, सब में अलग अलग है. एक इंग्लिश मीडियम वाले क्लास भी अगर आप ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ इंग्लिश मीडियम, यू विल बी सीइंग दैट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल निकालेंगे या इंटरेस्ट लेवल भी निकालेंगे लैंग्वेज के प्रति, तो वो बेल डायग्राम की तरह इन्वर्टेड बेल होगी, ऐसी इन्वर्टेड बेल होगी. हमें ये दोनों को लेकर के चलना है, दोनों साइड में. जिनके इंटरेस्ट कम है उसमें कौन सी मेथड फिट होती है वो ज्यादा. कई जगह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फिट होगी, कई जगह जो है लेक्चरिंग ज्यादा फिट हो जाती है, कई जगह जब हम पोएट्री पढ़ा रहे हैं, कई जगह तो अब एक ही पोएट्री है लेकिन वो अलग अलग तरीके से पढ़ाई जा रही है. एक क्लास में अलग है, एक सेक्शन अलग है. दिस इज सो बिकॉज द नीड्स ऑफ लर्नर्स आर डिफरेंट. हर लर्नर की नीड्स अलग अलग है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग जगह से आता है, और उसका इंटेलेक्ट फ्रेमवर्क भी अलग अलग है. तो एक कॉमन फ्रेमवर्क आपको निकालना है जिसमें आप कन्वीनियंट हो. सबसे पहली चीज तो आप कन्वीनियंट होना चाहिए, एंड दैट कन्वीनियंस शुड एड्रेस टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. एक पर्टिकुलर मेथड बेस्ट है ये नहीं कहा जा सकता. Okay, sir. Actually, Thank you, sir. suppose Sir, Yeah, actually, sir, we are running short of time. short of time, I do understand that. I do. Yeah, already it's 7:50 and we are having our chairperson, ma'am. So now I would like to request our chairperson, ma'am, Dr. Susma Misra, ma'am. Uh, Dr. Susma Misra, ma'am, is an assistant professor of English at Government Pandit Samacharan Shukla College, Dharsiva, Raipur. She has the teaching experience of 8 years in UG and 5 years in PG. Her specialization is in English, Indian writing in English. She had done her doctoral thesis on the colonial and post-colonial aspects in the novels of Mulkraj Anand. Dr. Misra had participated on various UGC-sponsored orientation courses and workshops and many national and international conferences and seminars. Her articles were published in numerous national and international journals. Dr. Misra ma'am had completed PRCN course at NCC Officers Training Academy, Gwalior with A grade and received Commandant's Certificate of Merit. Ma'am, now I would like to request, please address us. Thank you so much, Chirantan. First of all, I would like to express my thanks to the iSpell for giving me an opportunity. It's my first experience as a chairperson. So I just want to say that, sir, आपका lecture बहुत ही अच्छा था, and I'm very happy and very delighted because I met Indrani ma'am in CSIT. Sir has organized one national workshop there. I'm not recollecting the title of that workshop, but the memories are still very fresh in my mind. So it's हमारा इसमें डबल फायदा है.
because we are update with the time, हम news भी जान ले रहे हैं, and we are improving as well. Apart from that, newspaper में जो खबरें होती है, they are from different zones. जो होती है फिल्म के बारे में है, कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज है, पॉलिटिक्स की लोकल न्यूज, तो ही इंटरटेन है, है का इंग्लिश का, और अब मैं ये क्योंकि स्मार्ट सब को बहुत ग्रेट, लेकिन समय के बाद टॉनी जैसा हो जाता है, और इंटरनेट भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और समय भी हो गया है, तो मैं ज्यादा डिटेल में अभी ये नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सर आपका लेक्चर बहुत ही एनलाइटनिंग था और बहुत ही डिटेल था, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसको सुना, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड pleasure is mine. थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. Now, I would like to request our coordinator, Indrani ma'am, to say the vote of thanks. Ma'am, please. Yes. Thank you, Chirantan. Before vote of thanks, further, I would like to invite Dr. Kirti Tiwari ma'am. She is patron of iSpell CG Forum to present the certificates to resource persons as token of appreciation from iSpell CG Forum. Dr. Kirti Tiwari ma'am. I think she is not here. So I would like to request the president of iSpell CG Forum, Dr. Garcha ma'am, to present the certificates. Yes, thank you, Indrani. Indeed, it's an honor to facilitate the speaker, the chairperson, and the master of ceremony today. I'm extremely grateful to them for being a part of iSpill. Indeed, they have spared their valuable time to be with us, and our students have greatly benefited from the speech which the talk which and the views which Dr. Sharma has shared with us today. Indeed, I think we all have benefited greatly for his professional competence and from his expertise and the views which he has shared with us. Thank you so much for being a part of iSpill, sir. And this is a token of appreciation for your services which you have rendered today. This token of appreciation goes to Dr. Sharma, and I'm honored to present this certificate to him. Please accept it, sir. Thank you, madam. The certificate is accepted. I'm very happy to receive it from your hands. And in fact, it is an honor for me to be with iSpell. I'm very delighted that there is a team that is working incessantly, continuously, every Saturday and Sundays to improve the standard of not only teaching, but also learning English language and literature. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, sir, for your words of appreciation. No, it's very difficult task, to chair the session. And today, to do this honor, we had with us Dr. Shushma Mishra. She has beautifully summed up the views of Dr. Sharma and had added her own inputs to the lecture also. Thank you so much for chairing the session, Dr. Shushma ma'am. This certificate goes to you. Thank you, ma'am. Please Thank you so accept it.
Yes, ma'am. I am accepting this. Thank you so much, ma'am. It's indeed an honor for me. Thank you, ma'am. Thank you being a part of this event. Now, another difficult task is of being a master of ceremonies. You have to coordinate and control the whole event, and this has been wonderfully done by Mr. Chirantan Dash Mahaputra, who has very efficiently mastered the ceremony today. And this is a token of appreciation to you, sir. Please accept it. Thank you, ma'am. Thank you. And I am very grateful that ISPEL had given me this opportunity. This is the first time that I am here as Master of Ceremonies, and I'm grateful to ISPEL CG Forum. And I have really learned a lot of things. Hopefully, I will do the same in future also. Thank you. Thank you. But you're very confident, sir, and you've done it beautifully. Thank you. Thank you so much. And no, I'm also obliged to Indrani ma'am, Indrani Borkar. She's my student also, and she's the coordinator of ISPEL CG Forum. And she is the one who has taken the responsibility for the events of May. And this event was really very enlightening, very useful, and with many more to come. I congratulate you on the success of this event. Thank you, Indrani, for coordinating the event very beautifully. Thank you. And over to you. Thank you. Thank you, ma'am. As we have reached to the end of this event, I would like to thank Chief Speaker. Indeed, sir, it was a great session. And as a teacher, we have to be very entertaining in the classroom also. So this is one of the activities we definitely will acquire in our classrooms. So thank you so much for that. And I also thank our chairperson and moderator of the evening. And I extend my sincere thanks to all the office bearers of ISPEL CG Forum. And my special thank to Nurul for the technical support. I also thank Dr. G.A. Ghanshyam, founder of ISPEL, for his constant support and guidance. And I thank all the participants for being with us tonight. And thank you all. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you very much, Indrani. And it's really great that on the day of Gurudev Rabindranath Tagore, Chhattisgarh Forum has organized an event, and that too an event which has not only illustrated various aspects of English language teaching, but at the same time it has given a wonderful chance to listen to Dr. Chandrasekhar Sharma, and also about the words that we use and how to proceed about it, what should be the way to proceed. And all these things are really important as far as a teacher and a student is concerned. And especially as far as English language is concerned, these things are bound to happen every time. And for that, I should congratulate Chhattisgarh Forum Sir, good evening, sir. for continuously taking action in making the students and the faculty members to know the nuances of the language. So congratulations to all of you. And Dr. Chandrasekhar Sharma, indeed, it's a wonderful presentation and you deserve all the appreciation. So your blessings. Thank you very much. Sir, your blessings. Thank you very much, sir. Thank you for motivating me, sir. These are the blessings of the elders which are singing now. So blessings, they sing. Yes, sir. True, sir. True. Thank you, sir. Thank you all, and have a good night. Thank you so much for being a part of this program. Thank you so much. Thank you, and see you soon. Yes, yes, sir. Definitely. Yes. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. I am signing off. Yes, sir.